Hey guys, this is Dr. Aarti Mudaliar and welcome to my YouTube channel Accounting Arts. It's all about accounting. तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम पहला केस, दैट इज व्हेन ओनली वन को-वेंचरर मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. A and B entered into an agreement for a joint venture on equal profit sharing basis. राइट तो जैसे कि अभी तक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, यहाँ पर भी A और B दो को-वेंचरर्स हैं जो कि एक जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में आते हैं और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रख रहे हैं. ऑलराइट, now further they are saying that A bought goods from Kishori Lal worth rupees 70,000 and took from his own stock goods valued rupees 20,000. यानी A ने अब दो सोर्सेस से गुड्स का अरेंजमेंट किया है. नंबर वन, he has purchased goods from Kishori Lal and the other thing is he has brought his own goods. that is जो गुड्स उसने खुद परचेज किए थे उन गुड्स में से कुछ गुड्स उसने जॉइंट वेंचर के लिए कंट्रीब्यूट कर दिए. The further question says that he received 60,000 from B. Wow. So this is a capital contribution done by B. A then paid charges and expenses of rupees 1,500. इसके बाद A ने कुछ expenses पे किए हैं worth rupees 1,500 for the joint venture. All the joint venture goods were sold for rupees 1,24,500. This is a revenue and a sale made by the joint venture. A cleared the account of Kishori Lal. Kishori Lal जो कि उसका क्रेडिटर था, उसका अकाउंट A ने क्लियर कर दिया है कैश पे करके. And he is entitled to a commission of 4% on sales. यानी अब जो सेलिंग प्राइस है उसका 4% कमीशन किसने अर्न किया है? A ने खुद अर्न किया है. So this commission is a separate income which shall be recorded in his books of accounts. Now he also paid the amount due to B. यानी B को जितना भी बैलेंसिंग अमाउंट था, फाइनल सेटलमेंट था, वो भी A ने कर दिया. Now what they are asking from you to do? Give journal entries and write up joint venture account and B's account in the books of accounts of A. Right? So यहाँ पर किसको किस पर भरोसा है? B को A पे पूरा भरोसा है और A बना रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो वो कौन से दो अकाउंट प्रिपेयर करेगा? रिमेंबर, he will prepare joint venture account and B's account. ये तो बात हो गई ledger account की. But if he wants to record it as journal entry, then let us look at the journal entries in the books of A. Now, the very first transaction shall be recorded as bank account debited to B's account. Alright, यानी इस केस में सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन B ने किया है इस जॉइंट वेंचर में, that will be received by A. So either cash or bank account shall be debited in the books of A, है ना? Debit what comes in and credit the giver. So B's account will be credited with 60,000, that is the capital contribution. Next, the joint venture account debited to purchases account. ये कौन सा अकाउंट है? ये उस अमाउंट से किया गया है जितने गुड्स उसने खुद कंट्रीब्यूट किए हैं आउट ऑफ हिज ओन परचेजेस, आउट ऑफ हिज ओन स्टॉक. तो अगर A ने जब गुड्स परचेज किए होंगे तब उसने एंट्री पास की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश. और अब उन्हीं परचेज गुड्स में से कुछ गुड्स वो इस जॉइंट वेंचर में कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसकी एंट्री अब उसने पास कर दी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. यानी उसके खुद के परचेज अकाउंट रिड्यूस हो रहा है और जॉइंट वेंचर अकाउंट के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं. ऑलराइट, नाउ फॉर द परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट बेसिस, जो क्रेडिट परचेजेस उसने की हैं उसके लिए दिस क्रेडिट परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर द जॉइंट वेंचर. सो अभी भी हम जॉइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट करेंगे, बट नाउ वी विल रिकॉर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट. So Kishori Lal becomes our creditor, becomes A's creditor. So now he will record it as a creditor. So अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? For goods purchased on credit, joint venture account debited to Kishori Lal with 70,000. यानी दो अमाउंट ऑफ गुड्स हमारे बिजनेस में आ गए हैं, एक 20,000 के और एक 70,000 के. So total cost right now debited in the joint venture account is of 90,000. Now again, some amount of expenses have been paid. That is, joint venture account debited to bank because the payment is being made by A worth rupees 1,500. Now further they say that the goods have been sold off
with a certain selling price. Now that amount shall be credited to the joint venture account because it is revenue income for the joint venture, and the cash is being received by A. Therefore, the bank account will be debited in the books of A to joint venture account being the income or revenue of joint venture. Now on this sale amount, 4% commission was charged by A. So this is a commission income, and this income shall be credited in the books of A. And this, although is an income for A, but an expense for the joint venture. Therefore, again joint venture account will be debited with the amount of commission or the remuneration paid to the co-venturer. So entry would be joint venture account debited to commission, and this is 4% of 1,24,500. You can calculate it and find it out. Now after they are saying that Kishori Lal, that is the creditor, has been paid off with the amount. And what was his amount to be paid? The credit purchases we have made from Kishori Lal was of 70,000. तो अब हम 70,000 की पेमेंट कर रहे हैं किशोरी लाल को. So debit the receiver and credit what goes out. So Kishori Lal's account is debited and bank account is credited. The simple payment entry which we make always. Now after executing all the transactions, after making all the transactions, now we will find out the profit arising out of this joint venture. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली रफ में भी कर सकते हैं या फिर एक जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रिएट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर मान लीजिए हमसे बुक्स में नहीं कहा जाए, क्वेश्चन में नहीं कहते हैं कि अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ओनली जर्नल एंट्रीज आर टू बी पास, सो हाउ विल यू फाइंड आउट प्रॉफिट्स? जस्ट एड अप द अमाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर वेयर इट इज डेबिटेड, है ना. तो पहला हमने डेबिट किया है 20,000 का, दूसरा हमने डेबिट किया है 70,000 का, तीसरा डेबिट किया है 1500 से, और चौथा डेबिट किया है 4,980 से. You will have to add up all these debits together, alright? With the sum total of all these debits, now we will compare this sum total with the credits of joint venture account. तो आइए चेक करते हैं joint venture account कितने बार क्रेडिट हुआ है. तो joint venture account क्रेडिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक बार with the amount of sales, यानी 1,24,500. So out of this 1,24,500, you have to deduct all the amounts, all the four amounts you have debited in joint venture account. That is 20,000, 70,000, 1,500 and 4,980. After deducting these four amounts, the profit arrived at is 28,020 rupees. This is profit, which is the balancing figure in the debit side of the joint venture account, and hence the entry would be joint venture account debited to P&L to B's account. Remember, this P&L account debited is the profit share of A. Alright, this is A's share in profit, and the B's share in profit shall be written as B's account. I hope this is clear to all of you. Now since it is given in the question that they are equal co-venturers, so therefore this 28,020 rupees has been equally divided among them. यानी A का शेयर हम रिकॉर्ड करेंगे P&L में, क्योंकि ये डायरेक्टली उसके P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, और B का शेयर B के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. Now after doing all this, the balancing amount in B's account has to be settled by A. यानी B will receive now 74,010. अब ये अमाउंट कैसे आई, चलिए आके चेक करते हैं हम यहाँ पे. देखिए, B ने कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल के फॉर्म में 60,000, यानी A हैज टू पे बैक द 60,000 रुपीज. देन आउट ऑफ दिस ही हैज ऑल्सो अर्न 14,010 रुपीज. तो अगर आप B के अकाउंट को चेक करें तो पहली बार B ने आपको पे किया था 60,000 और अभी उसने अर्न कर लिए 14,010 रुपीज. सो 60,000 एंड 14,010 रुपीज दोनों एड अप करके A विल पे ऑफ B, राइट. सो 60,000 and 14,010 makes 74,010 rupees, and this is the final settlement to be made by A to B, है ना, क्योंकि B से उसने पैसे लिए थे और अब ये प्रॉफिट भी उसको रिटर्न करना है, यानी ये दोनों अमाउंट, उसकी कैपिटल और प्रॉफिट दोनों अमाउंट रिटर्न उसने कर दिया by making the final settlement. So 74,010 rupees has been paid back to B by passing this particular entry as B's account debited to bank. Now suppose if the question says, और क्वेश्चन में कहा भी है, write up joint venture account and B's account in the books of A. तो चलिए अब इसी की लेजर पोस्टिंग भी समझ लेते हैं फटाफट.
So here we have our joint venture account. All right. So joint venture account जब आप प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे दैट जॉइंट वेंचर अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, है ना. यानी सारे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और सारी इनकम्स क्रेडिट होंगी, राइट. सो विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यू मस्ट सी दिस जॉइंट वेंचर अकाउंट, राइट. नाउ look at the debit side of the joint venture account and we can see the cost which has arisen in the joint venture account. पहली दो कॉस्ट अराइज हुई है गुड्स के लिए, यानी गुड्स पर contributed by A worth rupees 20,000 and credit purchase of goods were also made worth rupees 70,000 from किशोरी लाल. तो ये जो दो कॉस्ट अराइज हुई है गुड्स के लिए इसको हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट करेंगे. जितना गुड्स ए ने खुद अपने परचेजेस में से कंट्रीब्यूट किया उसको हम 2 परचेजेस करके रिकॉर्ड करेंगे और जितने क्रेडिट परचेज किए गए हैं उनको 2 क्रेडिटर करके रिकॉर्ड करेंगे. ऑलराइट. फिर इस जॉइंट वेंचर में ए ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए थे वर्थ रुपीज 1500 विच इज अगेन एक्सपेंस ऑफ जॉइंट वेंचर. तो इसको भी हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया एज 1500 टू बैंक. Then joint venture account is again debited with the remuneration, the commission earned by A. So that is also debited to joint venture account and has been written as to commission. This is commission payable to A. जब हमने ये सारे कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए, अब समय आता है जब हमने गुड्स सेल किए. अब नाउ इट वाज अ कैश सेल्स, so we will record it in the credit side of the joint venture account as by bank account 1,24,500. I hope this is clear to everyone. Now the difference between the credit side and the debit side was 28,020 rupees. है ना? This difference was 28,010 rupees, which now has been transferred to A's account as profit and loss account and to B's account simply by writing his own name. Right? So I hope you have all understood joint venture account. Now let us understand how to prepare B's account. B, that is the co-venturers account. Now for the co-venturers account you must understand that he is a person, that is the rule of personal account is to be followed here, and we will start from the credit side because first he had contributed capital for the joint venture, right? So he had contributed 60,000 as capital and this amount was received by A. So A in his books of accounts will record it as bank account debited to B's account. Therefore, B's account has been credited with 60,000, that is the capital contribution made by him. Then B had earned profit out of joint venture worth rupees 14,010. So this share of profit also has been credited to his account and therefore the amount to be paid to B comes to 74,010, which is to be paid by A in the form of cash. So it is simply recorded as to bank. So this is the final settlement made to him. So I hope these two accounts are clear and this is the first method wherein only one co-venturer prepares the books of accounts. So he will prepare a joint venture account and the other co-venturers account. So since these are being prepared by A, so he has already prepared joint venture account and then he will prepare B's account. Fine. So we will meet for the next method wherein all the co-venturers prepare all the books of accounts. यानी A भी अपनी बुक्स में joint venture और B's account बनाएगा और B अपनी बुक्स में joint venture और A's account prepare करेगा. Alright, so I'll see you very soon. Art section introducing Footnotes, a thrilling dance channel on YouTube by the dancing doll Adrija Goswami. Go show some love to her channel.